Hello, friends. This is Bashir Ahmed Gojri. This time with a presentation about the rise of Adolf Hitler. Yes, this topic is mentioned in class 9th history book, chapter 3rd, and the name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. Who is in this picture? इस पिक्चर में आपको कौन दिखता है? Yes, this picture is of Adolf Hitler. ये पिक्चर Adolf Hitler की है. हिटलर 1889 में पैदा हुए in a small town in Austria. And he left schooling at the age of 16 और निकले वियना की तरफ. He dreamed of becoming an artist, लेकिन आर्टिस्ट बनने में फेल हुई for the lack of talent. और उसके बाद इसने क्या किया? He spent 5 years drifting from job to job. Hitler welcomed the outbreak of World War First. World War First जो 1914 में स्टार्ट हुआ, हिटलर ने इसको वेलकम किया and he volunteered to serve in German army. जहां उसे क्या? He was twice honored for bravery. During Hitler's stay in Vienna, he adopted extreme nationalist and racist ideas that were widespread in late 1800s. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर ज्वाइनिड अ स्मॉल नेशनलिस्ट ग्रुप इन मुच, और हिटलर ने उसका नाम चेंज कर दिया टू नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, एंड इट बिकेम नोन एज नाजी पार्टी. Hitler proved to be such a talented public speaker and organizer कि वो क्विकली नाजी पार्टी का लीडर बन गया. विथ हिटलर एज इट्स हेड, अब नाजी पार्टी का हेड लीडर हिटलर था. नाजी पार्टी began to grow. Parades and mass rallies drew excited crowds who cheered Hitler's speeches. और हिटलर स्पीचेस क्या थे? He attacked Versailles Treaty and the Weimar government. The Nazis and the government of Bavaria incident 1923. 1923 में नाजीज ने क्या किया? They tried to overthrow the government of German state of Bavaria. लेकिन इस अटेम्प्ट में नाजीज फेल हो गए एंड हिटलर वॉज थ्रोन इनटू जेल. हिटलर को जेल हुई. मेन कांप, जब हिटलर को जेल हुई, उस जेल में ही उसने अपनी पॉलिटिकल व्यूज एक किताब में लिखी और उस किताब का नाम रखा मेन कांप. मेन कांप मीन्स माई स्ट्रगल. मेन कांप में 2 थीम्स थे. एक था रेसिज्म और दूसरा था नेशनलिज्म. हिटलर क्लेम्ड कि जर्मन जो थे, दे वेर ऑफ मास्टर रेस, दे वेर डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्यन पीपल, और ही कंसिडर्ड जीव्स, स्लेव्स एंड अदर पीपल्स टू बी इंफीरियर रेसेस, जिन्होंने जर्मनी को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया. हिटलर ब्लेम्ड जीव्स फॉर ऑल द जर्मनीज प्रॉब्लम्स. जर्मनी में जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे उनकी डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हिटलर ने जीव्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया. हिज रेसिस्ट आइडियाज लेड टू एन एक्सट्रीम नेशनलिज्म. क्योंकि हिटलर बिलीव्ड दैट Germans were a superior people, he felt they had the right to rule over other people. Hitler called on Germany to rebuild its strength
to win back lands lost in Versailles Treaty, and to create a great German empire that would stretch across Europe. Germany 1919 to 1924. Movements like Nazis या leaders like Hitler ये often कामयाब हुए हैं when the times are hard और लोग जो है they are out of work, they are hungry, they are insecure and they are restless. और 1919 से 1924 तक वीमर रिपब्लिक को एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई. Germany camped near economic collapse in 1923. जब इन्फ्लेशन ने क्या किया, it made currency of Germany almost worthless. Great Depression 1929. In the fall of 1929, एक disaster economic depression आया. In nearly every country, हर कंट्री में और जर्मनी में खासकर ट्रेड डिक्लाइन हुई, बैंक्स कोलैप्स्ड, factories closed down, prices of stock fell steeply, business went bankrupt, and unemployment बढ़ गई. Germany was so hit कि 1932 की बात करते हैं तो 6 million people, nearly half of the German labor force, were out of work. ऐसे में हिटलर की अपील. Hitler's political strategy was simple. क्या थी? Simple or effective. Over and over he repeated what he wanted people to believe. He gave Germans an enemy to hate, a cause to fight for. Even हम कह सकते हैं he played on their emotions with spell-binding speeches and used violence to impress them with Nazi party's power. As a leader, he said that he would bring Germany out of the trouble. ये जर्मनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये जर्मनी को वहां से निकाल सकता है. Nazis had a powerful appeal for less wealthy people of the middle class, जिनमें शॉपकीपर्स, स्मॉल फार्मर्स, ऑफिस वर्कर्स, टीचर्स एंड आर्टिजन्स आते थे. और इन लोगों का बिलीव था कि हिटलर इनको बचाएगा फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड फ्रॉम कम्युनिस्ट्स. By the end of 1932, the Nazis had become the strongest political party in Germany. लेकिन strongest political party होने के बावजूद भी it was far from having a majority in the Reichstag. Reichstag means German parliament में अभी भी majority इनके पास नहीं थी. At this point, Hitler received much needed help from a small group of powerful industrialists, landowners, and bankers, as well as some generals. Most of these men did not share Hitler's extreme views, but they were impressed by his anti-communism and his promise to rebuild Germany. इन्हें लगा कि they could use Hitler to advance their own interests. In January 1933, they persuaded Paul von Hindenburg, the 86-year-old war hero who had become president of Weimar Republic, to make Hitler the Chancellor of Germany. Thank you for watching this presentation. For more such presentations, subscribe the YouTube channel titled Bashir Gojri. For any suggestions or modifications or for the PDF notes of the same topic, you can write to me on my email ID bashirgojri1@gmail.com.